Good evening, folks. This is Mayur Joshi, and I've got with me the entire MSI research team, Rushit Shechpal, Vakar Khan और पोंगरी राजशेखर. I know stock of the week हम डिस्कस करते थे and there was a gap और पिछले कुछ दिनों में because of the market volatility थोड़े हम परे रहे थे बाजार से. बट अभी आई थिंक जैसे आज ब्रॉडर मार्केट से रिस्पॉन्ड किया है, जैसे थोड़ी सैनिटी वापस आ रही है ग्लोबल मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में भी, हमें लगता है आई थिंक कुछ स्टॉक्स एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक ब्रेकआउट्स की दिखा रहे हैं और जो कैंसलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होते हैं उसमें से एक स्टॉक आप एक स्क्रीन पे देख रहे हैं, कैपेसाइट इंफ्रा. अब ये कंपनी है क्या, करती क्या है, रिजल्ट्स कैसे हैं, आउटलुक क्या है, इसके लिए मैं वकार और रुशित को कहूंगा कि थोड़े रिजल्ट्स और फंडामेंटल्स कंपनी के आप हमारे इन्वेस्टर्स को बताएं. तो वकार, ओवर टू यू इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल्स. थैंक यू मयूरेश। सो इसको बेसिकली बहुत सिंपल लाइन में हम इसे एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे कि कैपेसाइट इंफ्रा इज एन ईपीसी प्लेयर। ईपीसी प्लेयर को हम बहुत लेमन टर्म्स में कॉन्ट्रैक्टर्स भी बोल सकते हैं, जो डेवलपर्स के लिए बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं। सो इनकी स्पेशलिटी क्या है? इनकी स्पेशलिटी है हाई राइज और अल्ट्रा हाई राइज प्रोजेक्ट्स बनाना। हाई राइज अगर इनके टॉप लाइन का अगर हम देखें, सो अराउंड 75% उनका हाई राइज के प्रोजेक्ट से आता है। इफ अगर हम रीजन वाइज देखें तो रीजन इनका मेजरली एमएमआर, जिसको हम मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन बोलते हैं, उसमें ज्यादा डोमिनेटेड है ये लोग। दूसरा इनका आता है दिल्ली एंड थोड़ा बहुत बैंगलोर और थोड़े दूसरे साउथ में भी इनका प्रेजेंस है। अगर हम पब्लिक और प्राइवेट का अगर हम स्प्लिट देखेंगे इनके लिए, तो इनके मेजर रेवेन्यूज अराउंड 70% रेवेन्यूज कम फ्रॉम पब्लिक एंड 30% कम्स फ्रॉम प्राइवेट। पब्लिक में इनके मेजर कस्टमर्स है ओएनजीसी, म्हाडा, गिफ्ट सिटी इत्यादि। और अगर हम प्राइवेट में देखेंगे तो जितने भी बड़े नाम हो गए, मैक्रोटेक डेवलपर्स, डीएलएफ, ब्रिगेड, रेमंड रियलिटी, सारे गोदरेज प्रॉपर्टीज, सारे के सारे इनके बहुत लंबी लिस्ट है इनके कस्टमर्स है। इनका Q4 का रिजल्ट बड़ा ही जबरदस्त रहा है। Q4 FY24 का रिजल्ट, आई हैंड इट ओवर टू रुशित सो दैट ही कैन डिस्कस दैट रिजल्ट इन फर्दर डिटेल्स। Sure. Thanks, Vakar. So almost like major revenue इनका PSU से आता है। 70% इनका जो ऑर्डर बुक शेयर है, जो अभी ऑर्डर बुक इनकी 9,000 करोड़ की है, दैट ऑलमोस्ट कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एंड रेस्ट फ्रॉम द प्राइवेट प्रोजेक्ट. सो इफ यू आर सिटिंग समवेयर इन गोदरेज एमराल्ड और लोधा द पार्क, या फिर आप लोडा आलमेंटो में बैठे हो, या फिर रेमंड थाने में, सो इट इज बिल्ड बाय कैपेसिट इंफ्रा. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रिजल्ट, so the Q4 FY24 as well as the full year FY24 was one of the best, the highest ever revenue as well as the profitability for the company. So if you look at the Q4, the revenue was really good with a profit of 52 crore. And if you look at the full year revenue, that was almost 2,000 crore with a profit of 120 crore. अगर इसका EBITDA margin देखें तो consistently since last 2 to 3 years, it has been in between 18 to 20%. और इनका debt equity ratio is also very comfortable, just 0.2%. And they have projected that with the fresh revenue flow as well as the increasing profitability, they will try to reduce that further. So fundamentally, it's a very strong company, good order book, and the way the real estate sector is booming, the way the government planning on the capex is there, the private capex is there, प्लस जो ये ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट बिल्डर्स है जिसके बारे में वकार ने अभी बात किया, उनके जो प्रोजेक्ट्स की डिमांड है, इन्वेंट्री लेवल लो है, ऑब्वियसली दे विल कम अप विद न्यू प्रोजेक्ट्स, वो न्यू प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे तो दे हैज टू बी बिल्ड बाय कैपेसिट, वन ऑफ द की डेवलपर. और ये रहे फंडामेंटल्स कैपेसाइट के. द अदर पॉजिटिव थिंग जो कल हुई है, जब फाइनेंस बिल पास हुआ है लोकसभा में और राज्यसभा में भी होगा, इज दैट इंडेक्सेशन की जो एक नियम आए थे उसमें थोड़ी नॉर्मलाइजेशन आ गई है. सो द ग्रैंडफादरिंग ऑफ द क्लॉज हैज गॉट एक्सटेंडेड टू जुलाई 23, जो बजट का दिन था 2024. और इसलिए जो भी प्रॉपर्टीज इससे पहले रहेंगी विल हैव ईदर द इंडेक्सेशन और नॉन इंडेक्सेशन बेनिफिट, जैसे आपको सूट करता है. सो दैट्स अ ह्यूज सेंटिमेंटल पॉजिटिव फॉर द सेक्टर एज अ होल. अभी ये स्टॉक टेक्निकली और ओनिल के लेंस पे कैसे प्लेस्ड है, ये समझना भी बहुत जरूरी है. तो उसके लिए मैं राजशेखर को हैंड ओवर करता हूँ फॉर हिम टू एक्सप्लेन द टेक्निकल सेटअप एंड द ओनिल लेंस ऑफ लुकिंग एट कैपेसिटी. ओवर टू यू, राजशेखर. Yeah, sure, Myresh. As you can see here, the stock has been forming a stage two consolidation base pattern here.
And if you look at the pivot levels, currently it is very close to the pivot, 4% to the pivot. And one more good thing about the base formation is very ideal. You can see here during the base formation, when the stock pulled back slightly, it came under lower volumes, which is a very good sign. This is one of the basic or one of the good sign of a ideal base formation. And whenever the stock is forming the right side of the base formation, the volumes are picked up. Again, a very good sign. And it is very close to the pivot, so we can expect the stock to break out in the this week or the upcoming week. And if you look at the ratings wise, it is also looking good. EPS has been slightly lower at 66, but it's June quarter earnings are due. So whenever those earnings come out, we expecting good set of results, and EPS will turn good after the results. Price strength has been at 56. It is slightly consolidating around the pivot. That is the reason it has been an underperformer recently. But whenever it breaks out from there, definitely momentum will pick up, as mentioned by our colleagues here. And budget has also been announced. So definitely that macroeconomic event is behind us. So we are expecting good moment in real estate stocks, especially. And other factors such as number of funds, which is one of the good indicator, has been looking very good in this particular stock. So overall, if you look at the ratings and the chart wise, it is looking good on most of the parameters except for one or two, which can be negligible, given that there is N factor coming up in the coming weeks as well. Brilliant. So pivot level is 333 or 331, Rajshekar? I mean, what is the level to be watched out for? Pivot is at 333. So 0 to 5% from pivot is the level to be watched out. So around Perfect. 330 to 340, 350 levels is a very good area to accumulate. Perfect. So I think this is the levels that you need to watch out, guys. Keep this stock on your watch list. This is the stock that MSI team has on their watch list as well. So thank you so much for hearing this video that has been made by all my colleagues. Possibly the stock of the week, possibly the stock of the month. Fingers crossed. Thank you so much. Follow us more at MarketSmith India. Thank you.